Hi everyone, welcome to Insightful Maths, and thank you so much for all your likes and comments that you have given on my previous videos. Thank you so very much. In today's session, we are going to talk about linear equation in one variable, which is basically a topic for class 8. If any of the child of grade 7 also wants to go ahead of the things, because algebraic expressions is there in grade 7. So if you want to upgrade yourself a little up, so you can also see this video. All right. So, first, a quick recap. First term we already know is what is a constant. All the numbers are constant. Constant means where the value is fixed. It is not subject to change. तो जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, for example, we have 2, 3, 20, 1,000. All these numbers are known as constant. So please remember what is a constant? It is a number which has a fixed value. Another term that we have already studied in grade 7 is what is a variable. As the name itself is suggesting, variable means something which is not fixed, which is not having any fixed value. So all the alphabets that we use are variable because they do not have any value of their own. Whichever value we assign to them, those are variable. These are generally denoted by the small letters. For example, X, Y, M, N, Z. Any of these letters we may use for representing the variables. Next, operations. Operations are mathematical operations. We have 4 basic operations: addition, subtraction, multiplication, and division. So operation means which mathematical operation we are performing on the terms for the numbers. Now, terms that you have studied in algebraic expressions. If I have expression like x plus 2, it's an expression. So these are known as terms. The terms are combined using the mathematical operations for making the expression. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2 multiplied by x, this is a constant, this is a variable, this is a mathematical operation. तो अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे, I'll get 2x. This is my one term. अगर मैं लिखती हूँ 2x plus 3, this is my first term, this is my second term. ठीक है? So terms are combined to make expression, where the another one is expression that I have just explained to you. Terms are combined to make expression. Then what is an equation? अभी मैंने लिखा था 2x plus 3. I just said this is a term, this is another term. These are combined together, and together these are known as expression. But if I write it like 2x plus 3 equal to 6, then this expression is now converted to an equation because it has this equality sign. तो जहाँ पर भी आपके पास equal to sign होगा, there are two sides. Left hand side, which is in short known as LHS, right hand side known as RHS. So this is an equation as it has an equal to sign. अगर less than, equal to, or less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, if any such signs are there, it will not be considered as an equation. It will just be an expression. ठीक है? Next one is the coefficient. Coefficient means the number attached to the variable. जैसे अगर मैं इस पहली टर्म की बात करूं, first term, which is the number attached to the variable. My variable is x. Which number is attached to x? That is 2. 2 is the coefficient. So coefficient means the number or the constant attached to the variable. It is the number attached to the variable. So if I give you a term like minus 3xyz, if I give you the term minus 3xyz, and I ask you what is the coefficient of this term, so what is the number attached here? Number attached is minus 3. Please make sure when you're writing the number, it has to be accompanied by the sign of the number. If it is positive, then undoubtedly you need not to write positive. But if minus is mentioned, you need to write that minus sign. So coefficient here is minus 3.
वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट की बात किया, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द कंप्लीट टर्म. कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, जस्ट रिमूव दैट कोफिशिएंट, दिस रिमूव दैट वेरिएबल ओनली. हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढ रहे हैं, आप अपनी टर्म में से सिर्फ एक्स हटा दो, जो कुछ भी बचा है दैट इज योर आंसर. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? दैट इज -3/z. If I ask you what is the coefficient of y, आप इस पूरी टर्म्स में से, पूरी टर्म में से y हटा दो, हमारे पास टर्म क्या है? -3xyz. I'm asking you what is the coefficient of y. Just remove this y. So what you are left with? -3x and z. So your answer is -3xz. This is what? This is the coefficient of a variable. अगर हम coefficient of term की बात करते हैं, pick that term and just the number attached to that term, the constant along with the sign. ठीक है? Now, last one, for the recap, it is the degree of an expression. Degree means the highest power of a variable in that particular term. How are you here? अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x plus 3, this is x plus 3. x की पावर में कुछ भी नहीं लिखा. If nothing is mentioned, you have to consider it as 1. So what is the degree of this expression? Degree here is 1. If I write x squared plus x plus 3. Now, what is the maximum power of x here? It is 2. Maximum power of x here, it is 1. यहाँ पर variable है ही नहीं. There is no other degree. अब हमें इन दोनों को add नहीं करना है. Degree means the highest power of the variable in any term. First term में what is the highest power? It is 2. So your answer will just be 2. That is the degree of your this one expression. ठीक है? One more example I would like to take here. If it is given something like x square y square plus x square y. ये आपका expression है. And I am being asked to give the highest, the degree of this expression. बेटा जहाँ पर दो वेरिएबल एक ही टर्म में कंबाइंड होते हैं, you need to add the powers here. So x की पावर 2, y की पावर 2. 2 plus 2, the degree of this particular term is 4. What is the degree of the second term? x की पावर 2, y की पावर 1. 2 plus 1 is 3, degree is 3. अब मुझे तो डिग्री देना है इस एक्सप्रेशन का. सो व्हाट इज द आंसर? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इज व्हाट? इट इज 4 ओनली. हमें ऐड नहीं करना है, देखना है मैक्सिमम एक टर्म में कितना पावर बन रहा है, कितना डिग्री. दैट्स योर आंसर. सो आंसर हियर इज 4. आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस वर्ड लीनियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब आपके पास आपकी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होगा, या तो x होगा, y, z, एनीथिंग. इट कुड बी एनी वेरिएबल बट जस्ट वन वेरिएबल. x और y और z दो नहीं हो सकते, जस्ट वन वेरिएबल. अदर थिंग इज लीनियर. लीनियर मीन्स वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. अगर मेरे पास किसी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों? मैक्सिमम पावर तो 2 हो गया. लीनियर मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द इक्वेशन इज 1. अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x plus 2 is equal to 6. इज इट अ लीनियर इक्वेशन? पहली बात, इज इट एन इक्वेशन? आप देखो, देयर इज एन इक्वल टू साइन. यस, इट इज एन इक्वेशन. लीनियर मीन्स variable का highest power has to be 1. Variable is x here. What is the power of the variable? It is 1 here. Yes, it is a linear equation in one variable. ठीक है? So we have just discussed the linear equation in one variable. It is an equation which consists only one variable. Highest power of the variable will be 1.
It is asked many a times in the MCQ, so please do not get confused. Highest power of variable in a linear equation is always 1. Next, the solution of this linear equation can be any number. It can be a natural number, whole number, integer, or in short, I can say that the solution of the linear equation can be any rational number. क्योंकि हमें पता है natural number, whole number, integers, ये सब किसके अंडर आते हैं? All these come under rational number. आपका जो solution है वो हो सकता है natural number, whole number, integer, कुछ भी है. So that can be anything. This equation may consist of expressions which are linear on both the sides of the equal side. अब आप यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है. अगर आपको ऐसे कुछ गिवन है और आपसे पूछा है is it a linear equation? Equation equal to sign is there. It is an equation. Is it having one variable only? X is here, X is here. अब आप ये नहीं सोचोगे कि X वो आ गया, लेकिन है तो X ही ना. We have used just one variable X, one variable. What is the highest power of variable here? Highest power 1, highest power 1. ये दोनों अलग अलग टर्म है, आप इन्हें ऐड नहीं करोगे. So highest power is 1. It is a linear equation in one variable, जहाँ पर left hand side में भी एक expression given है, right hand side में भी expression given है. Now we'll be doing some questions. I'll explain you the transpose method for solving this linear equation in one variable. Transpose method. Let us first discuss what are the basics. If any, because equation means there is an equal to sign. If I have a positive number, let's say positive 3 on left hand side, और मुझे इसी right hand side ले जाना है, whenever I am changing the side of the variable, it is changing its sign. अगर प्लस का साइन चेंज करोगे it will become minus. अगर यहाँ पर आपका +3 होता and you are taking it to left hand side, it will become -3. एक चीज आप याद रखोगे, opposite of plus is minus, opposite of minus, if you are going back, it is plus. In the similar manner, opposite of multiplication is division and opposite of division is multiplication. कैसे? If I have 2x equal to 6, 2x means 2 is multiplied by x. जहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है ना, automatically consider it is a multiplication. What did I just say? Multiplication का reversed is division. तो अगर मैं यहाँ पर ये जो 2 multiplying हो रहा है, if I take it on another side, this will go down like this and 6 divided by 2, your answer is 3. Again, if I have -4x equal to 4, अब आप ये नहीं सोचोगे ये -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा. प्लीज डोंट मेक दिस एरर. अगर यहाँ पर होता x -4 इज इक्वल टू 4, ये -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है. -4x का मतलब होता है -4 इज मल्टीप्लाइड बाय x एंड दैट इज इक्वल टू 4. नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन? That is division. So x will be equal to 4 divided by -4. Your answer is -1. ठीक है? This is known as transpose method. Let us do this question based on the transpose method. जहाँ पर आपके पास variables are there on both the sides of the equation, आप variable को एक साइड करोगे, maybe towards left hand side or towards right hand side, and constants on another side. ठीक है? अब आप यहाँ देखो, it is a +x. अगर मैं इसका साइड चेंज करूँ, will it go to the left hand side as -x? Right? So it will be equal to 2x minus x, which is equal to, we are already having +2. अब लेफ्ट हैंड साइड इज -3, ये कांस्टेंट है. अगर -3 का साइड चेंज करना है, will it be +3? I just told you, minus the opposite is plus. Now, if I have to subtract these two terms, x और x minus नहीं होंगे, x minus x 0 नहीं कर देना. Variable will remain the same. What is the coefficient of x here? 2. Coefficient of x here is 1. 2 minus 1 is just 1 and 2 plus 3 is 5. 1x का मतलब क्या होता है? It is just x. So this is solved for the value of x. x की value is 5 here. ठीक है? Let's do the next question.
a similar question, but the numbers are given in the form of fraction. What did I say? आप x variables को एक साथ कर लो and constants को एक साथ. This 3/2 is having x. इसको मैं left hand side लेके जाऊंगी. 7/2 I am taking to right hand side. So left hand side will be 5x. ये plus 3/2x है. So will it go as minus 3/2x? Minus 3 upon 2x, which is equal to, it is given as minus 40 plus का 7/2 transpose to another side, it is minus 7/2. यहाँ तक ठीक है? Now, we know that we can add or subtract fractions only when they are like fraction. अब हमें इन दोनों को like बनाना पड़ेगा. Till now, it is having denominator 1 and 1. How to make like fraction? Take the LCM of the denominator. What is the LCM of 2 and 1? It is 2. तो मुझे दोनों का denominator 2 चाहिए. This fraction already has denominator 2. यहाँ पे तो पहले से ही 2 है. तो पहले वाले में मैं क्या करूँगी? Multiply 2 up and 2 down. Make that equivalent. In the similar manner, 1 or 2, LCM is 2. Multiply the first fraction with 2 up and 2 down. Let's see what we have got. 5x into 2. It is 10x upon 2 minus 3x upon 2, which is equal to 14 into 2 is 28. Along with the minus sign, minus 28 upon 2 minus 7 upon 2. I hope this much is easier for everyone. 2 is the common denominator. So it is now 10x minus 3x equal to minus 28 minus 7 upon 2. 2 is the common denominator. अब हम क्या करेंगे? 10x minus 3x. हमें सिर्फ constants को plus minus करना है. X will remain the same. 10 minus 3. 7x upon 2, which is equal to, now minus 28 and minus 7. Two negative integers together to be added along with the minus sign. So 28 plus 7 is 35. Sign of bigger number negative, it is minus 35. Denominator is 2. अब आप ध्यान से देखो, इस 7 और 2 को मैं कैसे हटाऊंगी. हम बेसिक ट्रांसपोज अपना याद रखेंगे. ये 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर रहा है ना, इट इज डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिवीजन? इट इज मल्टीप्लिकेशन. या एक चीज याद रखो, नीचे वाला नंबर विल गो अप, ऊपर वाला नंबर विल गो डाउन. ठीक है? सो ये वाला 2, इफ आई रिमूव द 2 फ्रॉम हियर, इट विल गो अप. एंड इफ आई रिमूव दिस 7, ये 7 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऑन अनदर साइड इट विल डिवाइड, इट विल गो डाउन. 2 up, 2 down, cancel. And 35 divided by 7 is how much? It is 5. आपके पास left hand side पे क्या बचा? X, which is equal to, we have a minus sign and just 5. So value of X here is X equal to minus 5. I hope this much is understood. Okay. Let us do one thing now. This is exercise 2.1 of your book. We are going to do these questions which I have ticked here. Rest of the questions, if you have doubt, please put in the comment option. Once you are done with these questions and you practice others, अगर दिक्कत आएगी in the next video when I will be discussing exercise 2.2, I'll do these questions for you. So first one now is 3x equal to 2x plus 18. One of the easiest question. 3x equal to 2x plus 18. What did I say? X वाली terms को variable एक side, constant एक side. This is 2x. If I take it to left hand side, will it become minus 2x? ठीक है, plus का minus बन जाएगा. So left hand side will be 3x minus 2x, which is equal to 18. Now what is 3x minus 2x? X तो same रहेगा. 3 minus 2 is 1. So 1x means just x. Answer is x equal to 18. That's your answer. बिल्कुल बेसिक था, इजी था ना ये. लेट अस डू द सेकेंड पार्ट. 5 times t minus 3 is equal to 3 times t minus 5. बेसिक हम याद रखेंगे, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड. ठीक है? म्यूट द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ एंड देन चेक योर आंसर.
दिस इज प्लस का 3t. अगर मैं इसे लेफ्ट लेके जाऊंगी इट विल बी माइनस 3t. सो आई विल बी हैविंग 5 टाइम्स t माइनस 3t इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे पहले से ही -5 है. नाउ -3 टेकन टू अनदर साइड इट विल बी प्लस. बेटा ये क्वेश्चंस करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव कमांड ऑन द नॉलेज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. I have already made the video on that. If you're still having the doubt, please watch that video. ठीक है? After that only you'll be able to do this easily. Now, t is there in both the terms. Like terms, t common, 5 minus 3 is 2, which is equal to -5 plus 3 is how much? It is -3. Up 2 and t, they are getting multiplied. So, t is equal to, opposite of multiplication is division. आप देखो यहाँ पर t ऊपर, ये 2 ऊपर है, तो another side it will go down like this. So -2 divided by 2, answer is -1. ठीक है? I hope this much is okay. Let's do the fifth question now. Question number 5 now says 2x minus 1 is equal to 14 minus x. That's your question number 5. I'm taking variables on one side, minus x gone to another side, it will give me 2x plus x is equal to 14, minus 1 gone to another side, it will be plus 1. आसान है ना? I hope now it's easy. 2x, एक बार 2x, एक बार 1x, 2 plus 1, it is 3x, which is equal to 14 plus 1, which is 15. अब इस 3 का क्या करें? 3 अभी ऊपर है ना, what did I say? सबसे आसान तरीका, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर. We do not have anything in the denominator. 3 is multiplied by x. तो दूसरी जगह कहाँ जाएगा? 3 will go down and 15 divided by 3 is how much? It is 5. So your answer is x equal to 5. Question number 6 now. It is 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. बिल्कुल सेम है. The only difference is x minus 1 in the bracket and 3 outside. It is given. ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए? प्लीज ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो. सो दिस विल बी नाउ 8x plus 4 is equal to, अब देखो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं. 3 multiplied by x, it is 3x. There is a minus in between, minus 3 multiplied by 1 is 3. Then we are having plus 7. यहाँ तक ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है, हाउ टू ओपन द ब्रैकेट. बेसिक रूल, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. नाउ 3x को अगर मैं यहाँ लेके जाती हूँ, विल इट बी -3x? यहाँ पे प्लस है ना, अनदर साइड माइनस. सो 8x minus 3x is equal to, we have -3 plus 7. अभी +4 taken to another side is -2, right? 8x minus 3x is how much? It is 5x, which is equal to -3 plus 7. How much? It is +4. -3 plus 7. एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव. क्या करते हैं? The difference of two numbers, bigger number positive +4. After that we have -4. But 4 minus 4 तो 0 होता है. So मेरा क्वेश्चन बना 5x is equal to 0. अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. Another side it will go as denominator. We know that 0 divided by any number is always 0. So your answer is x equal to 0. ठीक है? I hope you are finding it easier enough. Let me do question number 7 now. Exactly similar. X is equal to 4 by 5 into x plus 10. ठीक है? Step number 1, let us open the bracket. ये बिना ब्रैकेट के भी हो जाएगा. देखो 4/5 का मतलब 4 is getting multiplied with the whole bracket और पूरा ही term is getting divided by 5. इस 5 ये यहाँ डिवाइड कर रहा है. अगर मैं इसी लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ, क्या ये मल्टीप्लाई करेगा? राइट? 5 can be taken to another side, it will multiply by x. So that will be equal to 5x equal to 4 bracket x plus 10. सबसे आसान तरीका.
अगर आपको 5 ट्रांसपोज नहीं करना है, आप ब्रैकेट भी खोल सकते थे, 4/5x प्लस 4/5 10, सिंप्लीफाई करके आंसर सेम ही आएगा. 5x is equal to, now open the bracket, 4 multiplied by x is 4x plus 4 multiplied by 10 is 40. Take variables on one side. अगर मैं 4x को इधर ले जाती हूँ, it will be minus 4x. So 5x minus 4x is equal to 40. 5x में से 4x चला गया, only x is left out. आंसर आ गया आपका, देखो कितनी आसानी से. वैल्यू ऑफ x is equal to 40. राइट, एक और कर लेते हैं, द लास्ट वन. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स प्लीज डू योरसेल्फ एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, या जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आता हो प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन कवर इट अप इन नेक्स्ट वीडियो. वेरिएबल लेट अस टेक देम टू वन साइड. अगर मैं इसे यहाँ ले आती हूँ, सो 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15, ये प्लस का था, अनदर साइड माइनस, विच इज इक्वल टू 3 प्लस का 1 और अनदर साइड इज माइनस. यहाँ तक हमें आता है. नाउ मैं इन दोनों को माइनस तब कर सकती हूँ व्हेन दे आर लाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 15? एलसीएम ऑफ 3 and 15 इज 15. यहाँ पे तो पहले से ही 15 है. अब 3 को 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 अप एंड 5 डाउन. जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. 5 into 2, ये बना 10x माइनस 7x. दोनों का डिनोमिनेटर वी हैव मेड 15 विच इज इक्वल टू 3 minus 1 which is 2. यहाँ तक ठीक है. नाउ 10x minus 7x is how much? 10 minus 7, it is 3x upon 15 which is equal to 2. अब देखो 3 और 15, ये तो 3 की टेबल में आते हैं दोनों. 3 into 1 is 3, 3 into 5 is 15. सो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए? x upon 5 is equal to 2. What did I say? अगर एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे क्या करेगा? इट विल मल्टीप्लाई. नीचे वाला नंबर विल गो अप. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x is 2 multiplied by 5, that is equal to 10. I hope you are finding this topic easy and interesting, right? If yes, please comment. Tell me how did you find this topic. If any difficulties there, do rest of the questions. In another video, we'll cover up exercise 2.2, which is very, very important, where variable is given in the fraction form, right? If you have not subscribed the channel, please do the same. Thank you. Take care. Bye-bye.